Assalamu alaikum dear students, I am your English teacher for class 10th. Today I am going to reciting the poem Beautiful Hands. This poem is written by Ellen Emmett Gates, born in 1835. She was born in Torrington, Connecticut, USA. She wrote religious songs, hymns like The Home of the Soul and Eternity for well-known magazines. Collections of her poems were published in 1897 and 1910. Such beautiful, beautiful hands, they're neither wide nor small. And you, I know, would scarcely think that they were fair at all. I've looked on hands whose form and hue a sculptor's dream might be. Yet are these aged, wrinkled hands most beautiful to me. Such beautiful, beautiful hands, though heart were weary and sad. These patient hands kept toiling on, that their children might be glad. I almost weep when looking back to childhood's distant day. I think how these hands rested not when wine were at their play. Such beautiful, beautiful hands, they are growing feeble now, and time and pain have left their mark on hand and heart and brow. Alas, alas, the nearing time, and the sad, sad day to me, when neath the daisies out of sight, these hands must folded be. But oh, beyond the shadowy lands, where all is bright and fair, I know full well these dear old hands will palms of victory bear. When crystal streams through endless airs flow over golden sands, and where the old are young again, I'll clasp my mother's hands. इस पोम में एलन एमिथ गेट्स माँ के हाथों की तारीफ़ इस तरह बयान कर रही हैं कि अगरचे बुढ़ापे की वजह से इनके हाथ पहले की तरह नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए खूबसूरत हैं। वो मज़ीद कहती हैं कि मैं रो पड़ती हूँ जब मैं माजी को देखती हूँ और अपने बचपन को याद करती हूँ कि मेरी माँ ने कभी आराम नहीं किया। मैं खेल में मसरूफ़ होती थी, मेरी माँ के हाथ मेहनत व मशक्क़त में मसरूफ़ हुआ करते थे। अब इनकी माँ इस दुनिया को छोड़ने वाली हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा हो गई हैं। एलन एमिथ गेट्स के लिए बहुत अफसरदगी की बात है और ये एलन एमिथ गेट्स के लिए बहुत अफसरदगी की बात है। वो कहती हैं कि मेरी माँ के हाथ बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अब कमज़ोर होते जा रहे हैं। वक्त और दर्द ने इनके हाथों, दिल और पेशानी पर अपने निशानात छोड़ दिए हैं। वो अफसोस के साथ कहती हैं कि आखिरी वक्त करीब है, ये मेरी ज़िंदगी का अफसरदा तरीन दिन है। अब वो वक्त दूर नहीं जब मेरी माँ सर्द फूलों के नीचे और मेरी नज़रों से ओझल हो जाएंगी। एलन एमिथ गेट्स तसव्वुर करती हैं कि उनकी माँ तारीख़ ख़ित्तों से दूर, जहाँ सब रोशन है, जहाँ साफ़ व शफ़ाफ़ नदियाँ बह रही होंगी जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, सुरखरू हो जाएंगी, जहाँ बूढ़े फिर से जवान हो जाएंगे। मैं अपनी माँ के हाथों को दोबारा थाम लूँगी। Now, note down your homework. Learn and write these questions in English text copy. Chapter Beautiful Hands. Question number 1 is, by whom was this poem composed? Question mark. What do you learn? What do you know about him, her? Question mark. Question number 2 is, whose praise has been done in this poem? Question mark. Or, why does Ellen M.H. Gates praise her mother's hand? Question mark. Question number 3 is, how does Ellen M.H. Gates depict her mother's hand? Question mark. Question number 4, what does these hands must folded I mean? Question mark.
Question number 5. What scene does the poetess describe in the last stanza of the poem? Question mark. Question number 6. Write down the central idea of this poem. Question mark. What message is given in this poem? Question mark. This is the end of today's lecture. Complete your homework and submit it on coming Monday. Thank you.